बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं राइटिंग ए रिसर्च पेपर। तो रिसर्च पेपर को किस तरह लिखते हैं, इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज ए रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर क्या है? तो जब हम इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं जो हम डिस्कस करते हैं कि रिसर्च पेपर है क्या। A substantial piece of academic writing usually done as a requirement for a class in which the author does not independent research into a topic and writes a description of the finding of that research. A formal written report that includes research finding and a student's own ideas. Research papers are all about organizing your ideas in a linear, understandable format. A research paper is a report summarizing the answer to the research question you generated from the source you gathered information, then presenting the work in research paper format. तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था, व्हाट इज ए रिसर्च पेपर। जब हम बात करते हैं कि रिसर्च पेपर क्या है, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या करते हैं कि ये आपके पास a research paper requires exactly what is the name implies a lot of research. However, it more than just a recognition of the fact or an explanation of a topic. The research paper must give a perspective or make an argument. For example, if the topic of a research paper is abortion, then a writer should take a sentence on the abortion rather than just like the history of the abortion. While it is not needed to be for or against abortion, it needs to analyze one of these sentences. Next, हमारे पास जो क्वेश्चन है, how do I write a research paper? मैं कैसे रिसर्च पेपर लिख सकता हूँ? तो choose a topic which interest and challenge you. Your attitude towards the topic may well determine the amount of effort and enthusiasm you put into research. Focus on a limited aspect, narrow it down from the religion to wide, obtain a teacher approval for your topic before making on full-scale research. Select a subject you can manage, avoid subjects that are too technical, learned or specialized. Avoid topics that have only a very narrow range of source. तो जब हम इसके लिए इसको फर्दर डिस्कस करते हैं, इसमें क्वेश्चन क्या था जी, हाउ डू आई राइट ए रिसर्च पेपर। क्या मैं रिसर्च लिख सकता हूँ रिसर्च पेपर? तो ये उसका एक मुख्तसर सा जवाब था। तो नेक्स्ट आते हैं हम कि हमारे पास यूजुअली your topic for this paper will be on career pathways. Consider the following career focused question when researching. What type of career do you want? What are the job trends for your area of interest? What type of education will you need? What college school will you go to?
How much will your education cost? How long will it take to you complete your education? After college, what career will you have? What are the job requirements, duties? What types of company will you work for? Will you have to relocate? If so, where will you have to relocate? Will you be paid hourly or salary? What will be your income yearly? Do you have room for advancement? जब आप किसी पेपर की तरफ आते हैं तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आपको जवाब देने पड़ते हैं। तो ये वो चंद क्वेश्चंस थे जो पॉइंट्स के फॉर्म में हमने आपको बता दिए। तो उसके बाद स्टेप 2 में फाइंड इंफॉर्मेशन, आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। सर्च द नेट, पे अटेंशन टू द डोमेन नेम, एक्सटेंशंस। अगर आप नेट की बात कर रहे हैं तो डोमेन नेम या फिर आपके पास जो एक्सटेंशन है, कभी हम edu.gov.org, as these tend to be more reliable. Be selective of .com sites. Learn how to evaluate site critically and to search effectively on the internet. अगर आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करना चाहते हैं तो आपके लिए जो साइट्स हैं जिनको आप इफेक्टिवली डिस्कस कर सकते हैं कि वो कौन सी हो सकती हैं, यानी .edu.gov.org. बी सिलेक्टिव ऑफ .com साइट्स। ये आपको थोड़ा सा उसके बारे में है कि आपको जो इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं? इंटरनेट से लेते हैं। चेक आउट प्रिंट मटेरियल एज द लाइब्रेरी। ठीक है, तो अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं तो वहां पे ये चेक करें, उसमें आपको क्या है जी, काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। इंसाइक्लोपीडिया है, गाइड्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं और काफी सारा मटेरियल जो लाइब्रेरीज के अंदर अवेलेबल होता है। रीड एंड एवेल्युएट बुक मार्क, print out and photocopy and take notes of relevant information. जो भी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है उनके लिए आप वो कर सकते हैं। As you gather your resources, just down full bibliographical information, author, title, place of publication, publisher, date of publication, page number, URL creation or modification dates on web pages, and your date of access on worksheet. Print out or enter the information on your computer. Remember that an article without bibliographical information is useless, since you cannot cite it. तो ये जरा गौर से आप चीजें नोट कर लें कि जब आप रिसर्च की तरफ आते हैं, जो बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, ऑथर है, टाइटल है, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन है, पब्लिशर है, डेट ऑफ पब्लिकेशन है, पेज नंबर है, यूआरएल है, क्रिएशन है और मॉडिफिकेशन डेट्स ऑन वेब पेज और योर डेट ऑफ एक्सेस ऑन वर्कशीट. प्रिंट आउट एंड इंटर द इंफॉर्मेशन ऑन योर कंप्यूटर. तो आपने रिमेंबर करना है कि आर्टिकल विदाउट बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन इज यूजलेस, सिंस यू कैन नॉट साइट इट सोर्स. तो इसमें नेक्स्ट जब हम जाते हैं तो कैरियर इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं. तो ये कुछ साइट्स हैं जहाँ से आप कैरियर के बारे में यानी कि इंफॉर्मेशन ले सकते हैं.
नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, इंफॉर्मेशन के बाद स्टेट योर थीसिस, डू सम क्रिटिकल थिंकिंग एंड राइट योर थीसिस statement down in one sentence. Your thesis statement is like a declaration of your belief. The main portion of your essay will consist of arguments to support and defend this belief. तो सब जो तीसरा स्टेप है, state your thesis, अपने थीसिस को डिस्क्राइब करें with the skill and abilities. Exhibits the medical field is a career path I am interested in pursuing. तो ये वो चीजें हैं कि आपको कोई भी टॉपिक जब सेलेक्ट करते हैं तो आपके जहन में होना चाहिए कि ये सबसे अहम चीज है। और उसके बाद स्टेप 4 पे आपने क्या है, मेक ए टेंटेटिव आउटलाइन। The purpose of an outline is to help you think through your topic carefully and organize it logically before you start writing. Include an introduction, a body, and a conclusion. Make the first outline tentative. For example, introduction. Share your thesis and purpose clearly. What is the chief reason of the paper? Explain briefly the major points why reader should be interested in your topic. और दूसरा पार्ट क्या है जी, उसकी बॉडी है, present your argument to support your thesis statement. Remember the rule of 3. Find 3 supporting arguments for each position. और नेक्स्ट जो मेन पार्ट है वो है कंक्लूजन. Restate your thesis, summarize your argument, and explain why you have come to this particular conclusion. इस particular conclusion में आप क्यों आना चाह रहे हैं. तो इसमें एक स्केच आपको दिखाते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ एन आउटलाइन. इसमें हमारे पास क्या है जी, इंट्रोडक्शन है, ब्रीफ कमेंट लीडिंग इनटू सब्जेक्ट मैटर, thesis statement on शेक्सपियर. बॉडी क्या है जी, शेक्सपियर अर्ली लाइफ, मैरिज, वर्क, लेटर ईयर्स, अर्ली लाइफ इन स्टार्टफोर्ड, शेक्सपियर फैमिली, शेक्सपियर फादर, शेक्सपियर मदर, इसी तरह शेक्सपियर मैरिज. ये उसके डिफरेंट कंटेंट इस तरह बनाए गए हैं. उसमें प्ले है, उसके अंदर काफ़ी और भी चीज़ें दी गई हैं कि भाई ट्रेजेडीज क्या है, हैमलेट्स क्या है, रेमो एंड जूलियट, और ये कॉमेडीज, फिर उसकी सारी की सारी डिटेल्स दी गई हैं. तो ये रिसर्च गाइड फॉर रिसर्च स्टूडेंट भी अवेलेबल है इस लिंक के ऊपर. तो नेक्स्ट हम आते हैं कि ऑर्गेनाइज योर नोट्स. बार बार हर लेक्चर में मैं आपको यही पॉइंट रिवाइज करवाता हूँ कि ये जो वो चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइज योर नोट्स. Organize, analyze, synthesize, and sort and digest the information gathered to effectively communicate your thoughts, ideas, insights, and research finding to others. This is the most important stage in writing a research paper. Include only the relevant and understandable information. Make sure you have used your own words and have been carefully noted. Document all ideas, borrowed or quotes used to avoid plagiarism. Jot down detailed bibliographical information and it ready for your work cited page. तो इसमें नेक्स्ट हम चलते हैं. What is plagiarism? तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि प्लेजरिज्म क्या है. A piece of writing has been copied from someone else and is presented
as being your own work. To steal and pass off the ideas or word of another as one's own. To use another production without crediting the source, to commit the literary theft, to present as new and original ideas or product derived from an existing source. In other words, plagiarism is an act of fraud. It involves both stealing someone else's work or lying about the afterward. तो बेसिकली प्लेजरिज्म का मतलब ये है कि आप किसी का काम चुरा के किसी का आइडिया चुरा रहे हैं या किसी के काम को आप चुरा कर या किसी के काम को आप कॉपी पेस्ट करके यूज करते हैं. तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर प्लेजरिज्म. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो प्लेजरिज्म ही काउंट होंगे. टर्निंग इन समवन एल्स वर्क एज योर ओन, ये प्लेजरिज्म में आएगा. कॉपी वर्ड और आइडियाज फ्रॉम समवन एल्स विदाउट गिविंग क्रेडिट. Failing to put a quotation in quotation marks. Giving incorrect information about the source of a quotation. Changing the word but copying the sentence structure of the source without giving credit. Copying so many words or ideas from the source that it makes up the majority of your work, whether you give credit or not. तो ये जो चंद पॉइंट्स हैं ये प्लेजरिज्म की कैटेगरी में आते हैं. Most cases the plagiarism can be avoided. However, by citing source, simply acknowledging that the certain material has been borrowed and providing your audience with the information necessary to find that source is usually enough to prevent plagiarism. तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज MLA स्टाइल. तो रिसर्च में थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे APA स्टाइल को. अब हमारे पास क्या है जी MLA स्टाइल. ये डिफरेंट स्टाइल हैं. MLA स्टैंड फॉर मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन एंड इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर रिसर्च एंड टर्म पेपर. MLA फॉर्मेट इंक्लूड द स्पेसिफिक रूल ऑफ quoting author called citations. It is also allows for documenting the source author within the text of your research paper called parenthetical citations. There is also a specific format for creating the work cited page, which is sometimes called bibliograph. Writers who properly used MLA also build their credibility by demonstrating the accountability to their source material. Most importantly, the use of MLA style can protect writer from the accusation of plagiarism, which is purposeful or accidental uncredited use of source material by other writers. If you asked to use MLA format, be sure to consult the MLA Handbook for Writing the Research Paper 7th edition. अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आपको इस तरह करना पड़ेगा. तो नेक्स्ट तो जनरल जो गाइडलाइन है MLA के लिए, टाइप योर पेपर ऑन ए कंप्यूटर एंड प्रिंट इट ऑन स्टैंडर्ड वाइट. दिस पेज पे अगर आप करते हैं, double space the text of your paper and use a legible font. For example, Time New Roman. Whatever font you choose, MLA recommends that the regular and italics type style constant enough that clear
that they are recognizable one from another. On the font size should be 12 point. ये वो कुछ पॉइंट्स हैं जो MLA जर्नल की गाइडलाइन के लिए हैं। यूजुअली जो पेपर टाइप करते हैं तो उसके अंदर जो स्पेसिंग है वो डबल यूज करते हैं। जो फॉन्ट साइज है वो कौन सा यूज होता है, टाइम न्यू रोमन यूज होता है, और उसके जो पेज हम यूज करते हैं वो 12 पॉइंट यूज करते हैं। Leave only one space after period or another punctuation mark. Set the margin of your document to 1 inch in all sides. तो आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका जो मार्जिन है वो आपने सेट करना होता है 1 इंच ऑल साइड से। क्रिएट ए हेडर दैट, एक आप क्या करते हैं हेडर, दैट नंबर ऑल पेजेस consecutively in the upper right hand corner 1/2 inch from the top and flush with the right margin. Use italics throughout your essay for the title of longer work and only when absolutely necessary providing spaces. If you have any endnotes, include them on a separate page before your works cited page. Entitle the section notes to first page of your paper MLA format. आपके पेपर का जो पहला पेज है, do not make title page for your paper unless specifically requested. In upper left hand corner of the first page, list your name, your instructor's name, the course, and the date. Again, be sure, use double space text, double space again, and center the title. Do not underline, italicize, or place your title in quotation marks. Write the title in title case, standard capitalizations, not in all capital letters. Use quotation marks and or its italic when referencing to another work in your title, just as you would in your text. Fair and logic in last space. ये पूरे का पूरा उन्होंने लिखा है तो इसको उसने इटालिक कर दिया है। Where in after apple picking, यानी कि इसी तरह आपने नहीं लिखना बल्कि उसको इटालिक फॉर्मेट में लिखना है। Double space between the title and the first line of the text. Create a header in upper right hand corner that includes your last name followed by the space with a page number of all pages consecutively with Arabic numericals 1, 2, 3, etc. 1/2 of inch from top and flush with the right margin. Note, your instructor or the reader may ask that you omit last name, page number, header on your first page. Always follow the instructor guideline. तो अब नेक्स्ट हम आते हैं कि इन टेक्स्ट साइटेशन ऑथर पेज स्टाइल जो है वो क्या होना चाहिए। अगर हम MLA को फॉलो कर रहे हैं, MLA format follows the author page method of in-text citation. This means that the author's last name and the page number from which the quotation or paragraph is taken must appear in the text, and a complete reference should be appear on your works cited page. The author's name may appear either in the sentence itself or in parentheses following the quotation or paraphrase, but the page number should always appear in the parentheses, not in the text of your sentence. For example, Wordsworth stated that romantic poetry was marked by a
spontaneous overflow of the powerful feeling. तो इसी तरह भी आप लिख सकते हैं, या नेक्स्ट उन्होंने लिखा है कि रोमांटिक पोएट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय द, इस तरह भी लिखी जा सकती है, वो citation in the example about 263 and Wordsworth 263. Tell reader that the information in the sentence can be located on the page 263 of a work by an author named Wordsworth. If reader wants more information about the source, they can turn to the work cited page, where under the name of Wordsworth, they would find the following information. तो ये हमारे पास कुछ था बेसिक रूल वर्क cited पेज। तो ये हमारे पास क्या है जी, बेसिक रूल है, begin your work cited page on a separate page at the end of your research paper. It should have the same one inch margin and last name, page number, header as the rest of your paper. Label the page work cited. Do not italicize the word work cited or put them in quotation mark. And center the word work cited at the top of the page. Double space of all citation, but do not skip space between the entries. Ident the second and subsequent line of the citation 5 spaces so that you create a hanging indent. List page number of the sources efficiently when needed. If you refer to a journal article that appeared on page 225 to 250, list the page number on your work cited page. तो ये हमारे पास कुछ तो जो स्टेप 6 है, write your first draft, summarize the paragraph or quotations directly for each area you put plan to use. Find the techniques that suit you. Use note card or sheet of line paper. Mark each card with your outline code. Then put all cards in order. If using a word processor, create the file name that match your outline codes to easily cut and paste as you type your paper. तो ये एक हमारे पास क्या है, रिवाइज योर आउटलाइन एंड ड्राफ्ट। तो फिर आपने क्या करना है जी, आपकी जो आउटलाइन है और जो ड्राफ्ट है उसको आपने क्या करना है, रिवाइज करना है। तो उसके लिए एक चेक लिस्ट भी है। इज माय थीसिस स्टेटमेंट कंसाइज एंड क्लियर? डिड आई फॉलो माय आउटलाइंस? डिड आई मिस एनीथिंग? आर माय आर्गुमेंट presented in logical sequence? Are all the sources properly cited to ensure that I am not plagiarizing? Have I proved my thesis with strong supporting argument? Have I made my intention and points clear in the essay? ये हमारी क्या है, चेकलिस्ट है। और चेकलिस्ट 2 जो है वो हमारे पास क्या है जी, जब आप read your paper of the grammatical error, use a dictionary or do a spell check, correct all errors that you can support and improve the overall quality of the paper to the best of your ability. Get someone else to read it over. Sometimes a second pair of eyes can see mistake that you missed. तो उसमें हमारे जो चेकलिस्ट 2 है, did I begin each paragraph with a proper topic sentence? Have I supported my argument with documented proof or example? Any
Run or unified sentences. Any unnecessary or repetition words. Varying length of sentences. Does one paragraph or idea flow smoothly into next? Any spelling or grammatical error? Quotes accurate in source, spelling, and punctuation? Are all my citation accurate and incorrect format? Did I avoid use quotation? Use cannot instead of cannot. Do not instead of do not. Did I use third person as much as possible? Avoid using the phrases such as I think, I guess, I suppose. Have I made my points clear and interesting but remained objective? Did I leave sense of completion for my reader at the end of the paper? एक हमारे पास क्या है जी, चेकलिस्ट 1 है और दूसरी हमारी क्या है जी, चेकलिस्ट 2 है। तो जो स्टेप 8 है, टाइप फाइनल पेपर, ऑल फॉर्मल रिपोर्ट और इसे शुड बी टाइप रिटन एंड प्रिंटेड. Read the assignment sheet again to be sure that you understand fully what is expected of you and that your essay meet the requirement as specified by your teacher. Know how your essay will be evaluated compared to rubric. Proofread final paper carefully for spelling, punctuation, missing or duplicating word. Make the effort to ensure that your final paper is clean, tidy, neat, and attractive. Aim to have your final paper ready a day or two before the deadline. तो ये जो कुछ steps थे, how to write a good research paper. तो इसके लिए अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो वेलकम, otherwise I will end my lecture. I think no question from your side. So I am going to end my meeting for all. Allah Hafiz.